बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने जो अभी पीटीएस का टेस्ट आ रहा है वापडा का, तो उसके पास पेपर जो 2018 में पीटीएस ने कंडक्ट किया था, तो वो पास पेपर आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करने। और इस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस करने कि ये उस पीटीएस के जो 2018 में टेस्ट हुआ था वापडा का, तो उसमें कौन से एमसीक्यूज कहाँ से पिक किए गए थे, कौन से बुक से पिक किए गए थे, कौन से वेबसाइट से पिक किए गए थे। तो वो एक एक एमसीक्यूज का वेबसाइट और उसी एक एक एमसीक्यूज का बुक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये एमसीक्यूज इस बुक से पिक किया गया था, इस एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर ये है। तो होपफुली आपको इस वीडियो से अंदाज़ा हो जाएगा, आइडिया आप लोग को मिल जाएगा कि पीटीएस जो है वो किस टाइप के एमसीक्यूज को लाता है फॉर वापडा टेस्ट। ओके, अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके एक्सप्लेनेशन में नहीं दूंगा, क्योंकि वो सारे एक्सप्लेनेशन जितने भी एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी मैं अपने बाकी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने उन्हीं वीडियोस को एक्सेस करने तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे मेरे चैनल पे आने, ऑलरेडी प्रिपरेशन पे, यहाँ पे प्लेलिस्ट में आने और प्लेलिस्ट में आपको ये सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे आपने चेक करने। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल प्ले लिस्ट हैं, हांडा हो गया, वीके मेहता हो गया, वो सारे आपको वीके मेहता के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। स्मार्ट सीरीज के एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे अभी तक 17 वीडियोस अपलोड किए हैं, तो लाइक अप टू 170 एमसीक्यूज मैंने अभी तक कवर कर चुका हूँ, तो विद एक्सप्लेनेशन। ओके, लाइक जितने भी स्मार्ट सीरीज हैं उसके एक्सप्लेनेशन, लाइक जो एमसीक्यूज है उसके एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। तो ये यहाँ पे आपको एटॉमिक एनर्जी के पास पेपर भी आपको इस प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। तो आपके लिए बेस्ट ही हो कि आप चैनल पे आए, उसके बाद प्लेलिस्ट में आ जाए। तो प्लेलिस्ट में आप फिर जो आपके नेक्स्ट टेस्ट आ रहे हैं तो वो सारे पास पेपर आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे देख लो, वापडा हाइडल पास पेपर में और एमसीक्यू और पेपर भी अपलोड कर चुका हूँ, तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगी। ये मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड किए हैं ये सारे, 1 to 10 एमसीक्यूज 5-6 ट्यूटोरियल्स में यहाँ पे अपलोड किए, और इसमें आपको वो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। चलिए, इसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेसबुक पेज भी हैं, तो इस पे भी मैं अपडेट पुट करता रहता हूँ। तो ये अगर आपने इसको लाइक नहीं किया तो इसको भी काइंडली लाइक कर लें। So now let's move toward the PTS test. Okay, MCQ number 1, that is dielectric strength in case of mica can be expected to be more than 500 kVA per mm. Dielectric strength in case of mica, that is the best dielectric strength. इसका जो dielectric strength होता है वो काफ़ी बेस्ट होता है, तो वो that will be more than 500 kVA per mm. Okay, लाइक आपके पास m पर mm उसमें कितना लिमिट होता है वोल्टेज का, दैट इज 500 किलो वोल्ट। ओके, और ये एमसीक्यूज हांडा से पिक किया गया है, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग से पिक किया गया है, वहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएगा। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 2, दैट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर प्रेफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन एक्सेप्ट दैट इज ब्यूटाइल रबर। ओके, ये भी हांडा से सेम चैप्टर से एमसीक्यूज को पिक किया गया है। एमसीक्यू नंबर 3, दैट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक आर नॉर्मली यूज्ड फॉर डीसी एंड पावर फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन डीसी गिवन होगा, पावर फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, फिर बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी उसमें आएगा। डीसी भी और पावर फ्रीक्वेंसी के लिए भी हम यूज करते हैं, कि आपने याद रखना है। उसमें अक्सर स्टूडेंट डीसी को वो मार्क कर लेते हैं, बट पावर फ्रीक्वेंसी भी इसमें आता है। ओके, तो ये भी एमसीक्यूज सेम चैप्टर से पिक किया गया है। एमसीक्यू नंबर 4, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलर डाइलेटेड, दैट इज नायलॉन। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और पीटीएस में स्पेशली ये एमसीक्यूज काफी आता है, ये भी हांडा से पिक किया गया है। MCQ number 5, that is the impurity in liquid dielectric which has significant effect in reducing the breakdown strength is moisture. Okay, ये भी काफी important MCQs है और ये भी सेम Honda high voltage engineering से पिक किया गया है। MCQ number 6, that is a good dielectric should have all of the following properties except high dielectric losses. Okay, so ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ये भी हांडा से पिक किया गया। इसमें ज़्यादातर एमसीक्यू इस तरह भी होंगे कि वो शायद आपके अपकमिंग टेस्ट में रिपीट भी हो जाए, तो आपको ये इसके आंसर थोड़े से याद करने होंगे। एमसीक्यू नंबर 7, दैट इज द वेराइटी ऑफ पेपर यूज्ड फॉर इंसुलेशन पर्पस इज, दैट इज क्राफ्ट पेपर। ओके, ये आपने अगर
इलेक्ट्रिकल मशीन इंडस्ट्री में आप गए हो तो वहाँ पे आपके क्राफ्ट पेपर का ही जगह जगह पड़े होंगे। तो ये इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्राफ्ट पेपर है, ये भी हांडा से पिक किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8, कोरोना इफेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय फेंट वायलेट ग्लो। ओके, ये भी हांडा से पिक किया गया है। एमसीक्यू नंबर 9, इन वेंटिग्राफ जनरेटर output voltage is varied by controlling the corona source voltage. Okay, so output voltage is controlled by controlling this corona source voltage। ये भी हांडा से पिक किया गया, सेम चैप्टर से काफी सारे एमसीक्यूज को पिक किए गए हैं। एमसीक्यू नंबर 10, that is a Tesla coil is high frequency resonant transformer। Okay, Tesla coil is high frequency resonant transformer, ये भी हांडा से पिक किया गया है। एक्चुअली जो पीटीएस होते हैं उसमें वो बहुत सारे टेस्ट को कंडक्ट करता है, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टेस्ट को भी जब कंडक्ट कर रहा होता है तो लाइक जब टेस्ट को बना रहा होता है तो उस टाइम उनके कंप्यूटर के डेटा बेस पे बहुत सारे ये एमसीक्यूज पड़े होते हैं और वहाँ से भी पिक करते हैं। तो अगर आपके माइंड में ये एमसीक्यूज होंगे तो इट मीन्स कि आपने उनके डेटा बेस में जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको आपने एक्सेस कर लिए। तो नेक्स्ट टेस्ट में आपके लिए वो जब भी पीटीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टेस्ट कंडक्ट करेगा तो उसमें आपको आइडिया होगा कि वो किस टाइप के एमसीक्यूज लाते हैं, और होपफुली आपको अप टू 70 to 80% एमसीक्यूज जो होते हैं वो वर्ल्ड एमसीक्यूज ही होते हैं पीटीएस के स्पेशली। और एमटीएस वो आप स्मार्ट सीरीज को फॉलो कर दिया करो। एमसीक्यू नंबर 12, दैट इज ट्रांसफार्मर कंट्रीब्यूट टू रेडियो फ्रीक्वेंसी ड्यू टू कोरोना डिस्चार्ज इंटरनल और पार्शियल डिस्चार्ज स्पार्किंग ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। MCQ number 13, that is the electrical breakdown strength of insulating material depend on nature of applied voltage, imperfection, pressure, temperature, humidity। तो इसमें आपका all of the above correct option होगा, ये भी हांडा से पिक किए गए हैं। Vacuum insulation is used in all of the following except EHT of color TV। ये भी हांडा से पिक किया गया है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ये है। Aspect number 15, that is liquid are generally used an insulating material up to voltage stress of about 50 kilowatt per centimeter। Okay, this is not per millimeter, this is 50 kilowatt for 1 centimeter। Okay, that is for liquid। Okay, ये भी हांडा से किया गया है। MCQ number 16, when one of the three series resistor is removed from a circuit and the circuit is reconnected, the current is increase होगा। ओके, ये भी एक वेबसाइट से पिक किए गए हैं। इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो सीरीज कनेक्शन में हमारे पास जब हम रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसमें तो करंट सेम होता है, द करंट शुड रिमेन सेम। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट वो मिस्टेक करते हैं। ये एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास ओम लॉ क्या कहते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर। ओके, आर इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो इफ द ऑल थ्री रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज तो फिर इट मीन्स कि आपका क्या हो जाएगा, सारे इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, वो आपका सीरीज में है तो आपके सारे ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास करंट क्या है, करंट इज V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। तो अब हमारे पास R इक्विवेलेंट ज्यादा है। ओके, तो इट मीन्स कि करंट कम है। नाउ आई एम गोइंग टू डिक्रीज द R इक्विवेलेंट बाय रिमूविंग वन रेजिस्टर। आप एक रेजिस्टेंस को रिमूव कर दो तो आपका जो इक्विवेलेंट है वो कम हो जाएगा। तो जब ये कम हो जाएगा तो इट मीन्स कि आपका करंट ज्यादा हो जाएगा। तो व्हेन वन ऑफ द थ्री सीरीज रेजिस्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सर्किट and the circuit is reconnected, the current will get increase। Okay, current increase होगा, but the current in resistor 1 will be equal to the current in resistor 2। दोनों रेजिस्टर में आपका करंट जो होगा वो सेम होगा क्योंकि सीरीज में करंट है, बट करंट आपका इंक्रीज होगा। ओके, तो काफी ट्रिकी एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 17, दैट इज the number 3.2 times 10 to the power minus 5 ampere expressed using a metric prefix is तो 32 माइक्रो एम्पेयर है। ये कि ये इंडिया के वेबसाइट है, क्वांटिटी एंड मेजरमेंट वहाँ से पिक किया गया। पीटीएस ज़्यादातर एमसीक्यू जो है वो इंडिया बेक्स से लाते हैं। एमसीक्यू नंबर 18, दैट इज a resistor is connected across a 50 watt source, what is the current in the resistor if the color code is red, orange, yellow, silver। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियोस में काफ़ी, जितने में एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं वहाँ पे मैं काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ इन एमसीक्यूज को कवर कर चुका हूँ। दैट इज 2.2 मिली एम्पियर। ओके, ये भी इंडिया बैक से पिक किया गया है। एमसीक्यू नंबर 17, दैट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मिली एम्पियर्स ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट विद ए 40 वोल्ट सोर्स एंड 6.6 किलो ओम ऑफ रेजिस्टेंस। तो दैट इज 5.9 मिली एम्पियर। ओके,
ये भी ओम से लास्ट से पिक किया गया है इंडिया बैक्स के वेबसाइट। एमसीक्यू नंबर 20 दैट व्हेन अ फोर्थ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद थ्री रजिस्टर द टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज, वो आपका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया। एमसीक्यू नंबर 21 a string of 5 series resistor is connected across a 6-volt battery, zero voltage is measured across all resistors except R3, the voltage across R3 is। तो इनको आप सॉल्व कर लो। कोई कंफ्यूजन हुआ तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको गाइड कर दूँगा। इसका आंसर जो होगा करेक्ट आंसर वो शुड बी 6 वोल्ट होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 a certain series circuit resistance of 1 divided by 8 watt, 1 divided by 4 watt and 1 divided by 2 watt resistor, the total resistance is 1200 ohm. If each resistor is operating in the circuit at its maximum power dissipation, total current flow is 27 milliampere। इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों ने जितने भी एमसीक्यूज हैं इनको सॉल्व कर लो, कोई भी कंफ्यूजन हुआ तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा इसके एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस। ओके, लेकिन ये एमसीक्यूज में ऑलरेडी वहाँ पे इसके पीछे जितने भी कंसेप्ट है वो मैं ऑलरेडी वहाँ पे अपने और वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। तो होप आपके लिए बेस्ट ही हो कि आप उन वीडियोस को देख लो, तो फिर इस टेस्ट पे आ जाओ तो यहाँ पे आप फिर इसको सॉल्व कर लो तो होपफुली आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, द टोटल पावर इन ए सर्किट certain circuit is 12 watt. Each of the four equal value series resistors making up the circuit dissipate 3 watt. Okay, correct option is 3 watt. And MCQ number 24, all the voltage drop and the source voltage added together in a series circuit is equal to, that is 0. Okay, 25, if a 24 volt and a 6 volt battery are series opposing, the total voltage is 18 volt. Okay, ये भी series में से pick किया गया है। MCQ number 26, the output of a certain voltage divider is 12 volt with no load. When a load is connected, the output voltage will get decrease, वो decrease होगा। 27, the parallel combination of a 470 ohm resistor and a 1.5 kilo ohm resistor is in series with the parallel combination of 5 1 kilo ohm resistor. The source voltage is 50 volt. The percentage of the load current through any single 1 kilo ohm resistor is, so that is 20%. Okay, इस एमसीक्यूज में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये सीरीज पैरेलल सर्किट से पिक किए गए हैं वेबसाइट पे इंडिया वेक्स के। 28, a 20 kilohertz pulse waveform consists of pulses that are 15 microsecond wide. The duty cycle is 30%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, रिपीट भी हुआ है ये एमसीक्यूज। 29, a 5 millihenry and a 4.3 millihenry and a 0.6 millihenry inductor are connected in parallel. The total inductance is, तो ये लेस देन 0.6 मिली हेनरी होगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो यही स्टेटमेंट पढ़ने के बाद सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं और फिर ऑप्शन की तरफ आते हैं तो ऑप्शन में ये आपको इस तरह के स्टेटमेंट आपको गिवन होंगे, उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपने ऑप्शंस को भी थोड़ा सा वो देखना है। ओके, ऑप्शंस को भी आपने एक नज़र देखना है किस टाइप के वो आपको ऑप्शंस के बने। तो यहाँ पे देख लो, एज वी नो दैट इंडक्टर जो है उसको हम बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते हैं जिस तरह रजिस्टर को हम ट्रीट करते हैं, और हमारे पास जब पैरेलल में कनेक्ट होगे तो आपका जो इक्विवेलेंट होगा पैरामीटर, जो इक्विवेलेंट पैरामीटर होगा दैट विल बी लेस देन द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ओके, स्मॉलेस्ट इंडक्टर और स्मॉलेस्ट कैपेसिटर होगा, स्मॉलेस्ट इंडक्टर और स्मॉलेस्ट रेजिस्टर। ओके, तो यहाँ पे 0.6 स्मॉल है तो इससे भी कम होगा इसका इक्विवेलेंट। ओके, लेस देन 0.6 मिली हेनरी। As you can see, the winding resistance of a coil can be increased by increasing the number of turns or using thinner wire. Okay, then ये इंडक्टर से किए गए हैं। As you can see, when a current flowing through an inductor is cut in half, the amount of energy stored in the electromagnetic field is, that is quartered. Okay, as you can see, 32. In a series RC, 12 volt RMS is measured across the resistor and 12 volt RMS is measured across the capacitor. The RMS source voltage is very important MCQs, इस टाइप के MCQs काफ़ी important होते हैं। ओके, तो ये इसमें पास 19.2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, कर लो इसको तो 19.2 का आंसर आना चाहिए। MCQ number 33, when the frequency of the source voltage decrease, the impedance of the parallel RC circuit is, so that is increase। इसको इक्विवेलेंट फार्मूला आप लिख दो तो उससे आप फिर वो चेक कर लो। ओके, कि आपका इनवर्स रिलेशन आ गया, आपका डायरेक्ट रिलेशन आ गया। MCQ number 34, इनवर्स आना चाहिए यहाँ पे। ओके, MCQ number 34, that is an AC circuit consists of a resistor and a capacitor. To increase the phase angle above 45 degree, the following
condition must exist. R should be less than XC. XC is the perpendicular component, R is the horizontal component. So if you want to include like ये आपका 45 है, इससे आप ऊपर की तरफ जाना चाहते हो, दैट मीन्स कि आपने इस कंपोनेंट को इंक्रीज करना है. ओके, लाइक दिस. Question number 35. Question number 35. In a certain series resonance circuit, VC is equal to itna, VL is equal to itna, and VR is equal to 40. The value of the source voltage is 40 volt RLC circuit and resonance से ये MCQs को पिक किया गया है. Question number 36. In applying the superposition theorem, the source are considered one at a time and all other replaced by their internal impedance. Okay, easy MCQs है. Question number 37. In order to get maximum power of transfer from a capacitor source, the load must have impedance that is the complex conjugate of the source impedance. Okay, you should remember this. Question number 38. A two-terminal variable resistor is known as rheostat. उसको हम rheostat कहते हैं. Okay, two-terminal variable resistor को हम rheostat कहते हैं. Question number 39. A half watt is equal to how many milliwatt? Okay, that is 500 milliwatt. Okay. ये भी बेसिक MCQs आप प्लेलिस्ट में चले तो वहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में आप चले तो वहाँ पे इस टाइप के बहुत सारे वो मैथ्स प्रॉब्लम में सॉल्व कर चुका हूँ. कि आपने लाइक मिली या माइक्रो या फेम्टो में किस तरह कन्वर्जन करनी है. ओके, लाइक साइंटिफिक नोटेशन वीडियो होगी, वहाँ पे आप सर्च कर लो साइंटिफिक नोटेशन, वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएंगे. MCQ number 40. That is 300 joule of energy are considered in 15 seconds. The power is that is 20 watt. Okay, energy and power से ये MCQ पे किया गया. MCQ number 41. How many continuous current can be drawn from a 60 ampere hour battery for 14 hour? तो इसको आप बस 14 से डिवाइड कर लो तो ये आपका करंट दे देगा. That is 4.28 ampere. MCQ number 42. A 68 ohm resistor is connected across the terminal of a 3 volt battery. The power dissipation of the resistor is that is 132 milliwatt. Okay, you should remember this. MCQ number 43. When the speed at which a conductor is removed through a magnetic field is increased, the induced voltage that will get increased. Okay, that वो magnetism and electromagnetism से ये MCQs को pick किया गया है. MCQ number 44. The induced voltage across a coil with 250 turns that is located in a magnetic field that is changing at a rate of 8 Weber per second. तो वो आपका 200 वोल्ट होगा. इस पे आपने फेराडे लॉ को अप्लाई करना है. MCQ number 45. For a given wire wound core, an increase in current through the coil increase the flux density. Okay, ये हमारे पास correct answer होगा इसमें. If the cross-sectional area of the magnetic field increase but the flux remain the same, the flux density that will get decrease. Okay, ये magnetism and electromagnetism से pick किए गए हैं. Number 47. That when the current through the coil of an electromagnetic reverses, the direction of the magnetic field reverse. Okay, इसमें ये correct answer होगा. MCQ number 48. The unit for reluctance is that is ampere turns per Weber. Okay, magnetism and electromagnetism से MCQs पे किए गए हैं. MCQ number 49. A coil of wire is placed in a changing magnetic field. If the number of turns in the coil is decreased, the voltage induced across the coil will get decreased. Okay. MCQ number 50. What kVA rating is required for a transformer that must handle a maximum load current of 8 ampere with a secondary voltage of 2 kilovolt, that is 16 kVA. MCQ number 51. A certain transformer has 400 turns in the primary winding and a 2000 turns in the secondary winding. The turn ratio is that is 5. MCQ number 52. The primary winding of a transformer has 110 volt AC across it. What is the secondary voltage if the turn ratio is 8? Very easy MCQs, that is 880. MCQ number 53. The primary winding of a transformer has 110 volt AC across it. What is the secondary voltage if the turn ratio is 8? That is 880. Very easy MCQs. MCQ number 54. In a certain loaded transformer, the secondary voltage is 1/4 the primary voltage. The secondary current will be that is the opposite of the voltage, so that will get 4. MCQ number 55. That is, the primary winding of a power transformer should always be fused. Okay, MCQ number 56. In a certain transformer, the input power to the primary is 120 watt. If 8.5 watt are lost to the winding resistor, what is the output power to the load?
neglecting any other issue. तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना तो इसे आपके 111.5 watt आ जाएगा. Number 57, the maximum output voltage of a certain low pass filter is 15 watt. The output voltage at the critical frequency is, so that is 10.60 watt. ये passive filter. MCQ number 58. Passive filter से pick किया गया. MCQ number 58. When both input of NAND gate is high, output will be low. Okay, ये opposite of NAND, opposite of AND आपने इसमें लेना है. MCQ number 59, the angular velocity of a geostationary satellite is that is equal to the angular velocity of the Earth. MCQ number 60, a diode can be used as a frequency multiplier because of its non-linearity. Okay, ये block से लिया गया है. That is non-linearity. इसमें correct answer होगा. MCQ number 61, which of the following is not characteristic of an oscillator that is negative feedback? MCQ number 62, the other name for beta or BGT is current amplification factor. MCQ number 63, when the current in a FAT stop the flow of current, the condition is called that is pinch off. MCQ number 64, in N-type semiconductor, the minority carriers are that is holes. MCQ number 65, a power gain of 30 dB is equivalent to which amplification factor, that is 1000. MCQ number 66, UJT, unijunction transistor, when used for triggering an SCR as waveforms, that is very important MCQ. इसमें 60 correct answer आते हैं. MCQ number 67, the RMS value of a load phase voltage is that is 141.4 volt. ये electrical object question with answer से लिया गया है. Okay. MCQ number 68, if the DC bus voltage VD is equal to 300 volt, the power consumed by three-phase load is 3 kilowatt. That is electrical object question answer से भी ये pick किया गया है. Okay. MCQ number 69, a resistance of 50 kilo ohm has a conductance of that is 0.02 millisiemens. Okay. MCQ number 70, which of the following is incorrect? That is 1 joule is equal to 1 Newton per meter. Okay, ये incorrect है. MCQ number 71, electromotive force is provided by an electric current. Okay. MCQ number 72, in order that work may be done, a supply of energy is required. Okay. MCQ number 73, unit of resistivity is ohm meter. Okay. MCQ number 74, input impedance of operation amplifier is low. 75, output impedance of inverting operation amplifier is infinite. 76, in case of short circuit, the current is infinite. MCQ number 77, bulb in street are connected in parallel. MCQ number 78, a 240 volt 60 watt lamp has a working resistance of 960 ohm. MCQ number 79, R is equal to 10, I is equal to V2, P is equal to I square. और से आप इसको कर लो तो 40 वाट आपका आंसर आ जाएगा. MCQ number 80, conductance is the reciprocal of resistance. MCQ number 81, the motor used in ceiling fan is capacitor. Okay, ये काफी important MCQ. MCQ number 82, in brief, the higher voltage spike on AC power line is called that is arc. MCQ number 83, voltage drop is potential difference between 2 points. MCQ number 84, three basic quantities of electric current are VIR. Okay. MCQ number 85, ये अभी हमारे पास 85 के बाद जितने भी MCQs हैं वो हमारे पास जनरल MCQ स्टार्ट हो रहे हैं. Petrus Shah Buhari was Urdu poet. MCQ number 86, Man and Superman are written by Bernard Shaw. MCQ number 87, dog referred to land between two rivers. MCQ number 88, wave synonyms is not incest. Pardon. Okay, माफ करना. MCQ number 89, they felt humiliated because they had cheated. Okay. MCQ number 90, cataract means waterfall. Okay. MCQ number 91, Fadak garden was bestowed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a fay. MCQ number 92, the mother of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is buried in Abwa. MCQ number 93, in addition to enhance the skill. MCQ number 94, the Old Testament is called Torah. Okay, तो ये हमारे पास कुछ MCQs थे PTS ने जो टेस्ट कंडक्ट किया था 2018 में, तो उसके हवाले से ये सारे MCQs थे अप टू 94. तो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इलेक्ट्रिकल पोर्शन के किस टाइप के MCQs आते हैं और जनरल पोर्शन के किस टाइप के MCQs PTS लाता है. सो इसके इन्हीं MCQs में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा तो आप प्लीज़ वो जितने भी कन्फ्यूजन हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में पुट कर दे तो मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.